सो हाई गाइस, माई स्किन केयर वैनिटी कुछ ज़्यादा ही आई नो अभी मुझे मिल चुका है बजिलियंस ऑफ फेस वॉश. लेट्स स्टार्ट. अयो ओके, मूविंग टुवर्ड्स. मैं भूल रही हूँ कि मैंने क्या चीज़ कवर करी थी क्या नहीं. वेट अ सेकेंड. So hi guys, today I'm gonna show my skincare vanity. कुछ ज़्यादा ही आई नो बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ. वी वेंट टू डर्माटोलॉजिस्ट और मेरी बहन का स्किन केयर काफ़ी कॉम्पैक्ट हो चुका है जिस वजह से मेरा स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उसका सारा स्किन केयर भी मुझे मिल चुका है. दैट्स व्हाई आई हैव bajillions of serums, bajillions of face wash and some free gifts. Some new addition. So आप लोगों ने अगर मेरा नायका हॉल नहीं देखा है तो you can go and check it. Let's start. अयो बहुत ही ज़्यादा. I had washed my face with this simple refreshing facial gel wash. ये तो अनयूज्ड है बट मैंने अपना यूज़ वाला करा है जो मेरे वॉशरूम में है. इसके अलावा मेरे पास 2 और स्किन केयर है, मतलब 2 और फेस वॉश है. वो दोनों ही मिनिमलिस्ट के हैं. सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA. एक अभी बिल्कुल अनयूज्ड है, एक यूज्ड है. इसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ बिकॉज सैलिसिलिक एसिड स्किन को ड्राई करता है, जो मुझे लगता है मेरी स्किन को ड्राई करता है. तो मैं विंटर्स में इसको थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ यूज़ करना, वरना समर्स के लिए इट्स अ गुड फेस वॉश. सो नेक्स्ट स्टेप इन माई स्किन केयर इज टोनर. सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस बॉटल ऑफ Wonder Ceramide Mochi Toner and I have also repurchased same toner because I love this toner at the most. Like before hopping in the video, I'm gonna light my candle. This is sandalwood candle, sandalwood fragrance candle. Where I need, oh, I don't have anything. I have this Wonder Ceramide Mochi Toner which I'm going to use as the first step of my skincare, and it's unpacked. Next step is our serums and essence. For like essence, I have this Cosrx Nail Mucin. इसमें थोड़ा सा बचा है बट आई ऑल्सो रिसेंटली in Nykaa Pink Friday sale, you have seen that I have also repurchased or restocked this. We haven't opened this क्योंकि हमारे पास अभी पिछले वाला है, but yeah, we also repurchased this. इन कंपार्टमेंट्स में मेरा वो स्किन केयर है जो मैंने रीपरचेज करके रखा हुआ है. मैंने अभी तक खोला नहीं है और ये सब खुला हुआ है ऑलमोस्ट. सो फॉर नेक्स्ट स्टेप आई एम गोना यूज दिस नेल म्यूसिन. So what I have absorbed from like my skincare journey, snail mucin summers में तो उतना इफ़ेक्टिव दिखता नहीं है बिकॉज समर्स में उतना ज़रूरत भी नहीं होता, बट विंटर्स में इसकी इफ़ेक्टिवनेस दिखती है रियली. आई थिंक सो. मेरे सीरम्स यहाँ पे आई नीड टू ब्लो इट आउट क्योंकि सीरम्स है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सीरम्स. So first I have this reface serum that is a retinol which I use very often, once in a week. That's it, mostly on Saturdays. Next serum I have this minimalist vitamin C serum which mini जो कि मुझे free मिला था. Next I have this niacinamide minimalist niacinamide 10% face serum जिसे मैं twice a week लगाती हूँ on Tuesdays और Thursdays. और विटामिन C सीरम को मैं मॉर्निंग रूटीन में लगाती हूँ. मॉर्निंग रूटीन जो कि मैं अभी लगाऊंगी. नेक्स्ट आई हैव दिस मिनिमलिस्ट AHA BHA 10%. आई यूज़ दिस once in a week, mostly on Monday. Next I have this the Pink Foundry serum. It's a salicylic acid for acne control because my sister has acne. If sometimes the rare case the acne appears on my skin, I'm gonna use this. And I also have this Pink Foundry treatment that is also for like pimples. Just put it a drop on
your pimple and let it sit for like overnight. Now move towards the moisturizers, and I have lots of moisturizers, like really lots of moisturizers. So I'll give you like brief. So two currently I'm using, this is vitamin B5 10% and Marua oil 5% moisturizer from Minimalist. Okay, I'm a big fan of moisturizers from Minimalist. I love Minimalist moisturizer the most. You can see I'm the mostly Minimalist girl, but I love their moisturizer and serum the most. And I also have this Minimalist B12 moisturizer. Now, okay, moving towards the freebies, the total freebies I have. Firstly, I have this Plum Green Tea Zinc Super Matte Sunscreen Gel. This is a mini. And next, I have this .10K Vitamin C Super Bright Gel Face Wash, also a mini and free. Next, I have this .10K Skincare Barrier Repair Hydro Gel Face Wash, also mini and free. I'm just confusing क्या मैंने cover कर लिया है क्या मैंने cover नहीं किया है. Okay, so I have another mini, that is Minimalist Liquid Fluid SPF 50. I love this sunscreen. I also have this in a like bigger bottle. Yes, I also have this in bigger bottle, Liquid SPF sunscreen. I love this sunscreen. Really, it's really good. And then we have Alpha Lipoic plus Glycolic 7% cleanser. Next, I have another mini B12 Repair Complex 5.5 face moisturizer, a mini. I love mini. I don't know, I just don't use mini. I feel that they are very cute and I love them to stay in my vanity rather than using them. That's why I have that so many minis. I am just collecting them and not using any mini. Next, I have this Metallic Bond Repair. Oh, it's a hair shampoo. It's a mini. I got a trio hair shampoo, and I also got the Metallic Bond Repair Complex hair mask, and I also got a Frizz Control SPF 30 hair serum. तो ये पूरा का पूरा एक हैम्पर टाइप था, वो मिला था हमें फ्री में, एंड आई एम स्टिल कलेक्टिंग दिस. क्या रह गया? ओके, हाँ रह गया. देन आई हैव दिस जॉनसन्स बेबी क्रीम. ओके, सो मुझे कोविड के टाइम पता चला था कि आई एम वेरी एलर्जिक टू द बेबी प्रोडक्ट्स. डजंट सूट मी वेल. मुझे एक्ने देते हैं. So I have this Johnson's baby cream, but I love the way it smell, right? I love the way the baby products smell. They smell amazing. I need a perfume which smells like a baby. So I bought this and I use this baby cream as a hand cream. It's, you know what I mean. I also have this serum, Deconstruct Vitamin C serum. I also love this serum. I already had one which is over. It's finished and I already repurchased in case, because अभी तो मेरे पास Minimalist का Vitamin C serum है mini वाला, but जैसे वो ख़त्म होगा then I'm gonna hop or move into this serum because this is my favorite. The only thing I don't like this pump, क्योंकि जब लास्ट में बहुत थोड़ा सा बच जाता है तो मुझे कैप ओपन करके यूज़ करना पड़ता है. अदरवाइज आई लाइक दिस सीरम. बट एक चीज़ है, पंप से मैं बहुत कम सीरम यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू ड्रॉपर से मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, बट पंप से आई यूज़ वेरी लिटिल एज़ कम्पेयर टू द ड्रॉपर. I also have some, and this is the OG Vaseline. Just tell me who don't love Vaseline, right? I also have Boruline. Moving towards this sunscreen, so I have this sunscreen. This is .10K Vitamin C, Vitamin E Super Bright Sunscreen. I also have .10K Watermelon Sunscreen, but I'm not finding this. मैं अभी recently कुछ टाइम से travel कर रही थी तो मुझे लगता है कि मैं उसे अभी भूल चुकी हूँ. But I also have that. I love that sunscreen more. But these two sunscreen, this is .10K and Watermelon Sunscreen are my favorite, and the Minimalist Liquid Fluid. If I have to repurchase in future, I might go with the Minimalist Liquid Fluid. Next I have this Wish Cares AHA BHA Body Lotion. Next I have this one face mask from
बायोडेंस, इट्स अ कोलेजन मास्क जो कि अभी बहुत वायरल था इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत वायरल था. सो आई बॉट दिस. I'm gonna use this mask for my the glow up for 2026. I hope I covered everything. Oh wait, I didn't. I have so many things that मैं भूल रही हूँ कि मैंने क्या चीज़ कवर करी थी क्या नहीं. Then I have these 2 sachets from CeraVe. It's a foaming cleanser, travel size, and also have this Estee Lauder Advanced Night Repair Serum. Moving towards these, मैंने एक खोल के दिखा लिया था. तो इसमें मेरे पास एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र है मिनिमलिस्ट की तरफ से, दैट इज़ मरुआ ऑयल, बिकॉज अब विंटर्स चल रही है और विंटर्स में आई प्रेफर टू यूज़ मरुआ ऑयल रेदर देन एनी मॉइस्चराइज़र. देन आई हैव दिस नाइकास फ्रेंच लेवेंडर हनी हैंड क्रीम. Then I have this Mars creamy lipstick, which is almost, it is over actually, forget it. Then I have my face razor. Next I have this Mars drip lip mist. Then I have this Hyphen vintage infused peptide lip balm. I have Mars Caramello Crunch lip gloss. Next, okay, on another section I have this Minimalist B12 Repair Complex Moisturizer and repurchase nail mucin. I think so that's it. That's everything in my skincare vanity. I hope, I didn't use SPF. Sorry, I forgot to apply SPF. Show you my face washes, oil cleansers. Wait a second. So I have these 2 oil cleanser. That is one, first one is this, the Rice Water Bright cleansing oil. I love this cleansing oil. Next I have this Plum's cleansing balm. This is my favorite cleansing balm. I think so that is all for my skincare vanity. Yeah, that's all for my skincare vanity. I hope you guys like it, enjoyed it. I didn't do that much fun in this video, but I hope you guys like it. So do like, subscribe and comment. Bye bye.